So, hello students. Now we will discuss about Taylor-Foguel theorem. So, this is your LIMAYE functional analysis theorem 7.11. Statement is given that let X be norm space for every subspace Y of X, and every G belongs to Y dash. There is a unique Hahn-Banach extension of G to X if and only if X dash is strictly convex. Okay, that is for f1 not equals to f2 in X dash with f1 norm equals to 1 equals to f2 का norm, we have norm of f1 plus f2 less than 2. So assume that X dash is strictly convex. Let Y be a subspace of X and G belongs to Y dash. Let f1 and f2 be Hahn-Banach extension of G to X. If G equals to 0 in Y, then norm of f1 equals to norm of G equals to norm of f2 equals to 0. That is your norm of f1 equals to norm of f2 equals to 0, that is f1 equals to f2 equals to 0. So by similarly previous theorem में जो किया था, पहले हम g को 0 लिए थे, अब हम g को नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे. सो एज्यूम दैट नॉर्म ऑफ g इक्वल्स टू 1, वहाँ पर g ऑफ a इक्वल्स टू 1 लिए थे और प्रीवियसली g ऑफ a इक्वल्स टू 0 एंड g ऑफ a इक्वल्स टू 1. देन यहाँ पर g इक्वल्स टू 0 और नॉर्म ऑफ g इक्वल्स टू 0, देन नॉर्म ऑफ g इक्वल्स टू 1. So since f1 and f2 are Hahn-Banach extension of G to X, we have f1 plus f2 by 2 is a continuous linear extension of G to X. So therefore norm of f1 plus f2 by 2 equals to norm of G equals to 1. That is your f1 plus f2 equals to 2. That is a norm of f1 plus f2 equals to 2. Therefore norm of f1 equals to norm of f2 equals to norm of G equals to 1. So 1 plus 1 equals to 2. So by strict convexity of X dash, norm of f1 plus f2 less than 2, which is a contradiction. Okay, because norm of f1 plus f2 equals to 2 from equation 1. So we must have f1 and f2, that is, so we must have f1 is equals to f2, that is the Hahn-Banach extension of G to X is unique. So conversely, assume that X dash is not strictly convex, then there exists f1 f2 belongs to X dash such that f1 का norm equals to 1 equals to f2 का norm and norm of f1 plus f2 equals to 2. So let X dash be any sequence in X such that norm of xn equals to 1. अगर हम xn कोई sequence लेंगे X में, then उसका norm को अगर 1 लेकर चलेंगे for each n, and f1 of xn plus f2 of xn का modulus converge to 2. So by parallelogram लॉ हमने ये प्रूव किया है हिल्बर्ट स्पेस में, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में. सो बाय पैरेललोग्राम लॉ f1 ऑफ xn प्लस f2 ऑफ xn का स्क्वायर प्लस f1 ऑफ xn माइनस f2 ऑफ xn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ f1 xn प्लस 2 ऑफ f2 xn का स्क्वायर. सिंस नॉर्म ऑफ f1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f2, we have f1 xn less than equals to 1, f2 xn less than equals to 1, because अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका नॉर्म सुप्रीमम में लिखा जाता है, सुप्रीमम ऑफ f1 x f2 x एंड x का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर 2 into f1 of xn का स्क्वायर प्लस 2 into f2 of xn का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2 into 1 plus 2 into 1 less than equals to 4. Okay, so therefore f1 xn plus f2 xn converges to 2. 1 plus 1 equals to 2. Similarly f1 xn plus f2 xn का square converges to 4. Therefore first term of star tends to 4 as n tends to infinity. Okay, first term of star means that is your this one. Okay, this one, that is your 1 plus 1 का square equals to 4. Okay, ये यहाँ पर किधर गया, फर्स्ट टर्म ऑफ स्टार टेंस टू 4 एज एन ये, एंड सेकेंड टर्म ऑफ स्टार टेंस टू 0. हाउ? बिकॉज f1 xn minus f2 xn 1 minus 1 equals to 0. So it tends to 0. That is f1 xn minus f2 xn tends to 0.
f1 xn converges to 1 and f2 xn converges to 1. Okay, as we said recently. So y is equals to let x belongs to x such that f1 of x equals to f2 of x, and define g belongs to y dash, okay, by g is equals to f1y is equals to f2y. प्रीवियस में हम g इक्वल्स टू f1y लिए थे, अब हम इक्वल्स टू फिर एक ले लेंगे f2y करके. We will show that norm of g equals to 1. So norm of g equals to f by y का norm and f by y का norm less than equals to f1 का norm. Okay, and which f1 का norm equals to 1. Therefore norm of f1 norm of g1 less than equals to 1. So let a belongs to x such that f1 of a not equals to f2 of a, and define zn करके एक सीक्वेंस, वो zn इक्वल्स टू होगा xn माइनस f1 ऑफ xn माइनस f2 ऑफ xn डॉट a डिवाइडेड बाय f1 ऑफ a माइनस f2 ऑफ a. फिर अगर आप f ऑपरेट कर लोगे, आप इसको पोच करके देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है. ओके, कट बिट करके आएगा लास्ट में f2 ऑफ xn, ये आएगा लास्ट में आएगा ये f2 of xn minus a f1 of xn minus f2 of xn divided by f1 of a minus f2 of a. ये हम टोटल को हम zn लेके चल लेंगे. सो कुछ इक्वल्स टू हो जाएगा ये f2 of zn. देयरफॉर f1 of zn हम लेके चले थे यहाँ पर और हमको मिल गया f2 of zn. सो f1 of zn equals to f2 of zn, which implies zn belongs to y for each n. Therefore f1 of zn is equals to f2 of zn है. तो since we know f1 of xn minus f2 of xn tending to 0, okay, f1 of xn minus f2 of xn tending to 0, because norm of f equals to 1, so f1 of xn minus f2 of xn tend to 0 as n tends to infinity. These imply f1 of xn minus f2 of xn tends to 0, and since zn equals to xn minus a into, इसको आप ले लेना फंक्शन में, so f1 of xn minus f2 of xn tends to 0 and zn converges to xn, ये हुआ ना zn converges to xn. This implies zn minus xn tends to 0 h tending to infinity. Therefore zn minus xn का norm tend to 0. Since xn का norm equals to 1, we must have zn का norm equals to 1. ओके, बिकॉज xn का नॉर्म अगर 1 हुआ तो ऑब्वियसली zn का 1 अगर 1 zn का नॉर्म अगर 1 होगा तो ही ये कन्वर्ज करेगा, बिकॉज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ही ये 0 पर कन्वर्ज करेगा. सो वी हैव f1 ऑफ zn इक्वल्स टू ये जो हमने किया था. सो f1 ऑफ xn माइनस f2 ऑफ xn टेंड्स टू 0, which imply f1 of zn tending to f1 of xn h tending to infinity. They imply f1 of zn minus f1 of xn tend to 0 h tending to infinity. Therefore f1 of zn minus f1 of xn tending to 0, and as f1 of xn converges to 1, we must have f1 of zn converges to 1. अगर f1 of xn converges to 1 है तो f1 of zn must converges to 1 for large n. और अगर लेट yn इक्वल्स टू zn बाय zn का नॉर्म देंगे तो yn का नॉर्म 1 होगा. सो वी नो g इज इक्वल्स टू f1 बाय y. सो g ऑफ yn का नॉर्म इक्वल्स टू f1 ऑफ yn. f1 बाय y कट जाएगा बिकॉज yn बिलोंग्स टू y. अगर हम yn ऑपरेट कर देंगे तो g ऑफ yn इक्वल्स टू f1 ऑफ yn. g ऑफ yn इक्वल्स टू f1 ऑफ yn इक्वल्स टू yn के प्लेस में zn बाय zn का नॉर्म, एंड y1 बाय zn का नॉर्म स्केलर है तो वो बाहर चला जाएगा. ब्रैकेट में f1 ऑफ zn का मोड converges to 1. These imply g of yn converges to 1 as n tending to infinity. Therefore norm of g equals to 1. अगर g of yn converges to 1 है तो norm of g equals to 1 होगा as n tending to infinity. Thus f1 and f2 are two distinct Harmonic extension of g to x, which completes the proof. अगर आपको आशा है कि वीडियो में अच्छा समझ आ जाएगा.
ओके, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लो और वॉच करके भी देख सकते हो। थैंक यू।